Okay. Uh, Good afternoon, friends. So we are going to start our session today. So as you know that the this session was scheduled for yesterday, but due to the celebrations, this was cancelled. So we will continue with the same topic which I have already mentioned in the mentioned for the previous class. So today's class indicates that we have to discuss derivatives. But derivatives, I am going to postpone it for the last class, that is on 8th. So today I'm going to discuss the topic portfolio management. Okay. So we have already discussed the security analysis previously. So when you decide decide which security to buy and which security not to buy, you consider what are the returns of that security. Okay, what are the returns of that security, but and also you take the risk of that security. You take into account the return and risk of that security, and then you decide whether to invest or not to invest in that particular security. An investor, in order to make his total risk minimum, or in order to diversify, don't put all his funds in one. Don't put all his funds in one investment only. Okay, so he invests in a number of securities. So when you will add up all these securities, it is known as a portfolio. So now the question is how we should manage our portfolio. So there are various steps in the portfolio management. Like first, you will analyze the security in which you want to invest. So that is known as security analysis. So you will look at the risk and return aspect of that security, and then you will decide to invest or not to invest in that particular security. That is the first thing. Then you decide in how many securities you want to invest. Then you will revise this portfolio from time to time. Some of these securities may not be performing that well, and on the other hand, other securities may be doing very well. Like two securities giving a return of 20%, others are giving negative returns. So you may like to revise your portfolio. So portfolio is required to be monitored continuously, and you have to make out which securities you want to continue and which securities you want to discard. Okay, that is known as revision of the portfolio. Then next is the management of the portfolio. So from time to time, you will keep on adding or you will keep on deleting some stocks from your portfolio. So basically, the risk and return are the two important aspects of the portfolio management. There are different theories of the portfolio management as well. One of the important theories is the Harry Markowitz theory, and he has given a formula also in order to calculate the risk of the portfolio. Regarding the return of the portfolio, it is simply the weighted average return of all the securities in your portfolio. For example, if you have invested in two stocks, so weight of A into return of A plus weight of B into return of B, if you will add together, you will be getting the return of your portfolio. So that's very simple, calculating return of the portfolio. But regarding the risk, it is not the weighted average of the risk. In that case, another formula we have to use, which is a bit more complicated than calculating the return. Okay, so in order to calculate the risk of the portfolio, we also have to keep into account the correlation between the securities, like return the risk of security A plus not plus multiplied by risk of security B, and also will take into account the correlation between these two. That also affects the risk of the portfolio. These are the things which you have to keep in mind. From this particular topic, one numerical question of full 11 marks. If there are 5 questions, one question is expected from this particular topic. It is one of the very important topics of your syllabus. So you have to do this topic very carefully. So the questions which can be asked from this topic are the risk of the portfolio, the return of the portfolio. Then you may be asked to calculate or construct a portfolio with minimum risk. Then question can also be there from the capital asset pricing model, CAPM. Questions can also be there from the security market line, SML, and the questions can also be there from CML, capital market line. So out of this, I will tell you what is the difference between all these three. In one case, we are using beta, and in the other case, we are using the standard deviation of the security and standard deviation of the market. So where to use what, that we will be studying today in the class. So you should give more importance to the numerical questions from this topic, and you can also discuss the Harry Markowitz model and the portfolio theory, from which one question can be asked. So straight away we'll move on to the questions part, and we will be discussing various questions of this particular topic. The first question of this particular topic is: investor has two assets whose standard deviation is given. Returns is 30% and 40%. The standard deviation of the returns are given as 30% and 40%. So standard deviation of A is 30%, 0.30. Standard deviation of B is 0.40. Okay, and the assets are negatively correlated. R, or the correlation between these two, is -1. So we have to construct a portfolio which will eliminate all the risk. So when the correlation between two securities is -1, we can eliminate all the risk by constructing such a portfolio. So the formula for this is weight of A is equal to standard deviation of A divided by standard deviation of A plus standard deviation of B. Okay, so this is the answer. Okay, so what is given to us? Standard deviation of A is given 30%. Standard deviation of B is given 40%. And the correlation between these two securities is -1. If the correlation is -1, we will be using this formula. Okay, if the correlation between the securities is -1, in order to construct a portfolio with minimum risk. Okay, so we have to construct a portfolio with minimum risk. Minimum WA means we have to construct a minimum portfolio. Now we'll calculate the weight of security A. So the standard deviation of A is 30. So we'll, if we want to construct, if we want to construct the portfolio for A, we have to take the standard deviation of B, and vice versa. On the other hand, if you will construct the portfolio this portfolio of B, you will have to take weight of A. If you are constructing for A, it should be weight of B. So weight of B is 0.4, and weight of A is 0.3 plus 0.4. Okay, so this is very easy. 0.4 divided by 0.7. So this is 0.4 divided by 0.7. So it will be 0.57.
and this is the weight of A. Weight of B is 1 minus 0.57, will be 0.4. Okay. So if you want to construct or you want to know what is the percentage of funds you should invest in security A, you have to take as at the denominator the standard deviation of the other security. So if there are two securities, you have to take the standard deviation of the second one. So if you want to know the percentage of funds which are to be invested in security A, you will take the standard deviation of B. So standard deviation of B is 0.4 divided by standard deviation of A plus standard deviation of B. So in that case, 0.4 divided by 0.7. Okay, so that is the weight of it. Means 57% of the funds should be invested in security A, and rest of the funds means 1 minus 0.57, 0.43. 43% should be invested in security B. So this portfolio will give us the minimum risk of the portfolio. If we invest 57% in A and 43% in B, we will get a portfolio which has no risk or which has zero risk, because correlation is -1. If correlation is -1, we can eliminate all the risk from the portfolio, because if one security will appreciate, another will appreciate. That is why they have a correlation of -1. These two securities will work in the opposite direction. As a result, the overall risk of the investor will be 0. So that is the first question we have attempted. This is question number 1. Now we'll attempt question number 2. Question number 2, which says that the standard deviation of stocks A and B is 50%. 50% and 30%. Standard deviation of A is 50%, standard deviation of B is 30%, and the correlation is +1. Correlation is +1. Okay, and in which stock we have to invest? What should be the percentage of funds we should invest in order to minimize the risk? So in order to minimize the risk, if they have the perfect positive correlation, go for the stock which has a lower standard deviation. Okay, go for a stock which has a lower standard deviation. So in this case, B's standard deviation is lower than A. So it means we should invest 100% of the funds in stock B. This is only when correlation is +1. So it means our answer will be 100% of the funds in security B. Why? Because the standard deviation of security B is less than the standard deviation of A. 0.3 is less than 0.5. 0.3 is less than 0.5. So it means we should invest 100% of our funds. 100% of the funds should be invested in the security which has a lower standard deviation. Okay. This is only when they have a perfect positive correlation. ये कब यूज किया जाएगा जब कोरिलेशन +1 होगा, नॉट इन एनी अदर केस. और किसी केस में ये फॉर्मूला आप नहीं यूज कर सकते, सिर्फ एक ही केस में यूज कर सकते हैं जब उनके बीच में जो कोरिलेशन है वो परफेक्ट +1 है. ठीक है. ओके. Yes. Now we'll attempt question number 3. Question number 3. We have to calculate the expected return and expected risk. We have to calculate the expected return and expected risk of the portfolio. There are two securities. In 60% of the money into risky assets and 10% return with a standard deviation of 8%. So the funds invested in security A is 60%, and it is offering a return. The return offered by the security is 10%, and it has a standard deviation and a standard deviation of 8%. Standard deviation is 8%. And the balance in the risk-free asset means 40% of the funds are invested in risk-free. Risk-free means 60%, balance will be 40%, and offering 5% return. Return is 5%, and expected standard deviation of this portfolio 40%. Yes, deviation of 8%. Okay. Yes. So its risk will be 0. Risk of this particular asset will be 0. Risk is what is the yes, risk is 0, and yes, or standard deviation will be 0. Okay, these are the two assets which are available to the investor. The first asset in which he has invested 60% of his funds, this will give a return of 10%, and it has a standard deviation of how much? 8%, 0.8, 0.08 or 8%. In the second asset is he is investing how much? 40% balance, and it will offer a return of 5%. It will offer a return of 5%, and it has a 0 standard deviation. This means 0 standard deviation. Okay, so what we have to calculate? We have to calculate the expected return. So expected return is weight of A into expected return of A plus weight of B into expected return of B. Okay, so it means weight of A is 60% means 0.6, and the expected return is 10%, 0.10, plus weight of B will be 0.4 into 0.05 because it has expected return of 5%. Okay, weight of A is 60%. Okay, weight of A is 50%, 60%. 0.6 into 0.1, this is 0.06. Okay, 0.60. Okay, and in the second case, yes. So this is 0.6. So this is 0.06. 0.06 plus 0.02. So this will be 0.08 or 8%. Expected return from this portfolio is 6% plus 2%, that is 8%. If we invest 60% of our funds in security A and the remainder in security B. Okay. Now in this case, we also require correlation in order to calculate the risk. But if one of the security has a standard deviation of 0, in that case even correlation is not required. So we will look at the covariance. Covariance means how these securities perform together. Okay, so covariance is standard deviation of A into standard deviation of B into correlation of A and B. Correlation, if any one of these three have 0, covariance will become 0. So in this case, standard deviation of B is 0. So this is 0.08 into 0 into correlation. So whatever may be the correlation, the entire thing will become 0. Whatever may be the correlation, we don't know the correlation in this question, it is not given. But anything multiplied by 0 will become 0. So it means this security has a covariance of 0. So that is equal to 0. Correlation, although we require, but since one of the security has 0 risk, it will have a standard deviation of 0. So covariance will not be required. So we will be using the formula in order to calculate the risk of the portfolio. Risk of the portfolio is, the formula for this is weight of security A square
into standard deviation of A square plus weight of security B square into standard deviation of B square plus 2 weight of A, weight of B, standard deviation of A, standard deviation of B, correlation of A and B. This formula will be used. Okay. Yes, the formula given below. Risk of the portfolio, that is portfolio risk, standard deviation of the portfolio, is under the root, is equal to under the root weight of A square into standard deviation of A square plus weight of B square into standard deviation of B square plus 2 into weight of A into weight of B into standard deviation of A into standard deviation of B into correlation between A and B. Between correlation between A and B. Okay? Correlation between A and B. If you will solve it and put all the things in the question, you will be getting the answer. Because the last thing will become zero, last part, because one of the security has zero risk. Security B has a zero risk. So the entire last part will become zero. The entire last part पूरा का पूरा zero हो जाएगा. So that will make the problem easier for us. So putting all these things into the formula, weight of A is 60% means 0.6 square into standard deviation of A 6 square into 0.1 square plus weight of B 0.40 into standard deviation of B. Standard deviation of B is 0.05 square plus this thing will become zero because one of the security has a zero risk. The entire thing will become zero. So you can solve it in order to calculate the standard deviation of the portfolio. You can solve this equation. The equation is 0.6 into 0.6 square into the standard deviation of A square 0.1 square plus 0.4 square into 0.05 square. Okay, if you will add it up, you will get, and you will solve it, and you will get the under root. It will be 0.048 or 4.8%. 0.048 or 4.8%. 4.8%. Okay. So when one of the security has zero risk, the entire last thing will become zero. The last portion of the formula will be equal to zero, and it will make things easier for us. And it will make things easier for us. Okay. This is question number 3 of Granita Tripartite. I have already given you the facts of this question. Facts of the question are: investor has invested 60% of his money into security A, and it has a return of 10%. Oh, okay. Standard deviation is 0.8. Okay, please make a correction. Standard deviation is 0.8. Standard deviation is 0.8. So this is 0.08. 0.08. Not 0.1. It is 0.08. 0.08. It has a standard deviation of 0.08. Okay. Its return is 10%. I confuse the return with this. It has a return of 10%, but it has a standard deviation of 0.08. The second security's weight will become 40% because you have 100% fund, 60% in one asset means 40% in the other asset. So which has a standard deviation of 0.05. Okay, so if you will solve it, you will get 0.048 or 4.8. Okay, so this is the case when one of the security has zero standard deviation. Okay, so next question is regarding construction of a portfolio with minimum risk. So there are 3 cases are given, and in this case we will be using 3 different formulas in order to construct portfolio with minimum risk. Portfolio with minimum risk. Okay, we have to construct a portfolio with minimum risk. Standard deviation of security A is 3%, 0.03. Standard deviation of security B is given 9%, 0.09. And Nishant is having a surplus of 20 lakh for investments in these securities. How much he should invest in each of these securities? We have to calculate weight of A and weight of B in order to minimize the risk. Okay, and in the first case, the correlation is -1. Okay, this is the given facts which are given. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 3%, सिक्योरिटी ए का, वाई का कितना है 9%, और उसके पास 20 लाख एक्स्ट्रा, वो आपको ये बताना है कि कितना पैसा वो किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करे, हाउ मच फंड ही शुड इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी ए एंड हाउ मच ही शुड इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी बी. In the first case, if correlation is -1, so in case the correlation is -1, the formula is weight minimum risk of A is standard deviation of B, standard deviation of A plus standard deviation of B. Okay, this is the formula. For security A, we need at the top standard deviation of B. जिस सिक्योरिटी का आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन अपोजिट, और ये यू विल टेक द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द अदर सिक्योरिटी. अगर ए का कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो बी का लेंगे, अगर बी का कर रहे हैं तो ए का लेंगे. ठीक है, सेम सिक्योरिटी का लेंगे ऊपर टॉप में, नीचे दोनों का ही लेंगे, सिक्योरिटी ए प्लस सिक्योरिटी बी. ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं. ए का जो हो जाएगा वो ए के लिए ए की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 3%, तो हम बी का ले रहे हैं 0.09. ठीक है, तो उसमें 0.03 प्लस 0.09 मींस 75%. So we should invest 75% of the funds. We should invest 75% of the funds in security A. उसमें X लिखा हुआ है, X और Y प्रॉब्लम सेम है. ठीक है, 75% of the funds should be invested in security A. तो उसके पास कितने पैसे हैं फंड्स इन्वेस्ट करने के लिए? 20 लाख. तो 20 लाख का 75% कितना हो जाएगा? 75% of 20 lakhs. So it means he will invest 15 lakh. 15 लाख उसको ए में इन्वेस्ट करने हैं. He has to invest 15 lakh in security A and the balance in security B means 5 lakh he has to invest in security B. If this portfolio has a risk of -1, अगर इस पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो -1 है,
ठीक है, सॉरी कोरिलेशन -1 है। अगर इस अगर दोनों सिक्योरिटीज में कोरिलेशन है वो -1। सेकंड पार्ट है अगर कोरिलेशन -0.30 है, -0.30, correlation is -0.30, correlation is -0.30। अदर फैक्ट्स आर सेम। एक्स की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 3 है, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इज 0.03, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इज 0.09, ठीक है। तो in this case we will be using another formula, that is standard deviation of B, minimum weight of A is equal to standard deviation of B square minus covariance AB divided by standard deviation of A square, standard deviation of A square plus standard deviation of B square minus 2 covariance A and B. This is standard deviation of A square. Okay. Standard deviation of B square minus standard deviation minus covariance AB, टॉप पे लिखेंगे standard deviation of B square minus covariance of AB divided by standard deviation of A square, standard deviation of A square plus standard deviation of B square minus 2 covariance AB। तो covariance कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया ही हुआ है, that is covariance is equal to standard deviation of A into standard deviation of B into correlation A and B, standard deviation of A into standard deviation of B into correlation AB in order to calculate the covariance, ठीक है। तो correlation is standard deviation of A into standard deviation of B into correlation A and B. So in this case correlation is -0.30। तो ये हमारा कोवेरियंस पहले निकाल लेते हैं। कोवेरियंस इज 0.03 into 0.09 into -0.30। So let us solve it. This is 0.03 into 0.09 into 0.03 into 0.09 into 0.03। So this is okay, 8 e raised to the power -5। Okay, so instead, yes, this is point, okay, 0.03 into 0.09 into 0.03. This is 0.03 into 0.09. This is 0.0027, 0.0027, 0.0027 into 0.03 into 0.03. So this will be 0.27 at the top. Okay, so this will be the covariance. So this will be the covariance minus covariance will be this minus 0.00027, and
in the denominator you will get standard deviation of A square, means 0.03 into 0.03 into 0.03. So this is 0.0009 plus 0.09 into 0.09. This is 0.0081 plus already we have solved it, 2 into minus 0.00027. Okay, in the end you will be getting this at the top 0.00027. Okay, and in the denominator we will be getting 0.0009 plus 0.00081 plus minus 2 into minus 0.00027. So when you will solve this equation, you will be getting 84% for A, 84% for A, and 16% for B. You will be getting 84% for A and 16% for B. So this formula is used. You have to remember this formula. This formula will be used when they have correlation other than -1 or +1. -1 और +1 के अलावा कोई भी हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. अगर जीरो कोरिलेशन होगा तो दिस कोवेरियंस पार्ट विल go away. If correlation is 0, covariance will also become 0. So the last part will go away, as in the case of the third part of the question. In the third part of the question, they have a correlation of 0. Correlation of 0 means covariance will also become 0. Covariance will also become 0 automatically. If correlation is 0, covariance will also become 0, because one of the constituents of covariance is correlation. So if correlation is 0, the entire thing will become 0, and we will get a formula. Okay, so we will get a formula: weight minimum of A is equal to standard deviation of B square divided by standard deviation of A square plus standard deviation of B square. So we can simplify this. If it is, this is the third formula for calculating the respective weights. This is the third formula for calculating the respective weights. So weights we can calculate. If they have correlation which is not which is 0. So this is the formula. Okay, this will be the formula. Okay, so solving this question for the third part, if they have the correlation of 0, so standard deviation of B is 0.09. So 0.09 is square divided by 0.03 square plus 0.09 square. So this will give us a figure of 90% for A, 0.9 or 90% for A. So this will give us a figure of 0.9 or 90% for A and 10% for B. So we have discussed all the three situations where in order to minimize the risk, in order to calculate the minimum risk. Okay. Okay. When correlation is +1, when correlation is -1, when correlation is 0, or correlation is other than -1 or 0. So all the three situations we have discussed, and how to calculate the respective weights of the securities. We can calculate the weights of the securities. Yes. Next question is question number, we are going to discuss question number 7.
This question is very important from the viewpoint of the examination. It covers various aspects. Question number 7. Okay. Yes. So in this question we have to calculate. It's a very comprehensive question and very good question for the purpose of practice for your examination. This question asks us to calculate what? Expected return, expected risk of both securities A and B, covariance between A and B, and coefficient of correlation of returns on security A and B. All the things required we have to calculate. Okay, so the data is given for both the securities. There are two securities in the portfolio. Return on A and return on B is given. Return on security A as well as return on security B is given. So we have to calculate the expected return on security A and expected return on security B. And also we have to calculate the risk. So I will write down the data here. Okay, what is given? Probability is given. Probability 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Okay. So 0.1, 0.2, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. This is the probability. And the returns are return for A. Let us calculate for return A. Return A are 5, 9, 12 and 15. 5, 9, 12 and 15. Both the returns are given for both the securities, but I am doing it for security A only. I am doing it for security A only, not for security B. I am doing it for security A. Then I will do it for security B just to make the things more simple and more clear to you. So, what we will calculate? RA into PI. RA into PI. So this is probability, PI, this is return. This is probability, this is return. So R into PI, we will be getting first 0.1 into 5. 0.1 into 5, you will be getting what? 0.5. Okay? 0.2 into 9, you will be getting 1.8. Third is 0.3 into 12. 0.3 into 12, you will be getting 3.6. Next is 0.4 into 15. 0.4 into 15, you will be getting 6. Okay? So if you will add all this, sigma or total of all this, this will be 11.9. 0.5 plus 1.8 plus 3.6 plus 6. So the total is 11.9. So expected return from this security is 11.9%. 11.9%. First part. So we also have to calculate the risk of this security. In order to calculate the risk, what you require? PI into R minus expected return. R is the return given to you in the question. Expected return is the mean return, which we have already calculated. So mean return is 11.9. We have already calculated. So first will be 5 minus 11.6. 5 minus 11.9, sorry. 5 minus 11.9 into PI. PI is 0.1. Second will be 9 square. You have to square it up. Okay, 5 minus 11.9 square. Okay, so that is that will be square 6.9. 6.9 into 6.9. 6.9 into 6.9 into 0.1. What you will be getting is 4.761. 4.761. ठीक है? तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5 minus 11.9 square into PI. PI is what? Probability. Probability is given what? 0.1.
So what you will be getting total? So total you will be getting is how much? 4.761. 4.761. So this figure already I have calculated 4.761. Second case, you will be getting 9 minus 11 point. 9 minus 11 point how much? 9. This will become 2.9. 2.9 into 2.9 into 0.2. All these figures you are getting in minus. But when minus and minus multiply, it will become plus. माइनस को माइनस से जब आप गुना करेंगे तो वो प्लस हो जाएगी. तो 9 minus 11.9, this will become minus 0.29. minus 0.29 स्क्वायर है, इसलिए इसको minus 2.9 into minus 2.9 into 0.2. तो आपको मिल जाएगा 1.682. You will be getting 1.682. आपको जो फिगर मिलेगी वो क्या हो जाएगी? 1.682. थर्ड केस में हम लेंगे, कैसे लेंगे थर्ड केस में? 12 minus 11.9. 12 minus 11.9 कितना हो जाएगा? 0.1. ठीक है, तो 0.1 into 0.1 into 0.03. 03 क्या है? प्रोबेबिलिटी है. तो 0.1 कहाँ से आया? 12 minus 11.9. तो ये इसका स्क्वायर अप करेंगे 0.1 into 0.1 into 0.3. So you will be getting 0.003. 0.003. और लास्ट केस में हम करेंगे 15 minus 11.9. 15 minus 11.9, that is 3.1. So 3.1 into 3.1 into 0.4. What is the figure we are getting? 17 point. Sorry. So we are getting 3.844. 3.844. 3.844. Now you will add up all the things which we have calculated. Add up all these things. सबका टोटल अप करेंगे तो ये वेरिएंस निकल जाएगा 10.29. 10.29 is the variance of security A. तो वेरिएंस इज द सिक्योर ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन. यहाँ स्टैंडर्ड एविएशन इनटू स्टैंडर्ड एविएशन विल बिकम वेरिएंस. तो इसका मतलब अगर हमको स्टैंडर्ड एविएशन निकालना है तो वेरिएंस का अंडर रूट निकाल लेंगे. तो अंडर रूट निकालेंगे 10.29 का. 10.29, the under root is 3.21. Under root is 3.21. So this is the standard deviation of this security. This is the standard deviation of this security. We have already calculated the return of this security. Return तो हमने already calculate कर लिया. अब हमारा क्या रह गया? रिस्क. रिस्क कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी. रिस्क कितना हो गया? What is the risk of this security? 3.21. Okay. Now we'll do it for security B. जैसे हमने सिक्योरिटी A के लिए किया है वैसे ही हम करेंगे सिक्योरिटी B के लिए. तो सिक्योरिटी B के लिए कैसे करेंगे? उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.1, 0.2 और 0.3 और 0.4 सेम है. सिक्योरिटी B का आप देखते हैं. नाउ विल मूव ऑन टू सिक्योरिटी B. और उसकी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न दी हुई है वो है 4, 4, 11, 17 एंड 24. 4, 11, 17 एंड 24 ये आपको दिया हुआ है. 4, 11, 17 एंड 24. दिस इज द रिटर्न. अब हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करेंगे. 4 into 0.1 कितना हो जाएगा? 0.1, 0.4. 4 into 0.1, this will become 0.4. Second is 11 into 0.2, this is 2.2. 11 into 0.2, 2.2. Third is 17 into 0.3. 17 into 0.3, this will become 5.1. कितना हो जाएगा? 5.1. तो फोर्थ हम लेंगे. फोर्थ वन क्या लेंगे?
0.4 into 24. 0.4 into 24, that is 9.6. 9.6. ठीक है, ये कैसे लेंगे? 0.4 into 24, 9.6. आप इन सबको ऐड कर देंगे तो यू विल बी गेटिंग ए फिगर ऑफ 17.3. 17.3. तो हमको कितना मिल जाएगा? 17.3. 0.4 प्लस 2.2 प्लस 5.1 प्लस 9.6. तो आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17.3. तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी होगी सिक्योरिटी बी की? 17.3. अब हमको इसका रिस्क निकालना है. वी हैव टू कैलकुलेट द रिस्क. तो रिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे हमने सिक्योरिटी ए के लिए किया था, जस्ट लाइक वी डिड इन द केस ऑफ सिक्योरिटी ए, वी विल डू इट फॉर सिक्योरिटी बी. तो इसके लिए हमको क्या करना है? रिटर्न माइनस रिटर्न ऑफ बी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी स्क्वायर इनटू पीआई इनटू प्रोबेबिलिटी. तो रिटर्न कितनी है? 4 पहले केस में 4, और एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी है? 17.3. तो 4 माइनस 17.3 कितना हो जाएगा? माइनस 13.3. माइनस 13.3 इंटू माइनस 13.3 स्क्वायर करना है ना, इसलिए माइनस 13.3 इंटू माइनस 13.3 इंटू 0.1. ठीक है, माइनस 13.3 इंटू माइनस 13.3 इंटू 0.1. तो ये आपकी फिगर आ जाएगी 77.689. 77.689. ठीक है, 13 का स्क्वायर करना है, 13 इंटू 13, ठीक है, इंटू 0.1. यस, माइनस this is 13.3 into minus 13.3. Let me check it. I have already done it. 13.3 into 13.3 into 0.1. तो ये आ रहा है 17.689. ठीक है, already I have calculated it. It is 17.689. ये कैसे कैलकुलेट किया आपने? ये 13.3 इंटू 13.3 माइनस के हैं दोनों के, इसलिए प्लस हो जाएंगे, इंटू 0.1. तो दिस इज 17.689. 17.689. Similarly, we will do it for the second. Second one is 11 minus 17.3. So this will become 6.3 minus 6.3 into minus 6.3 into 0.2. Minus 6.3 into minus 6.3 into 0.2. तो ये हो जाएगा 7.938. The figure you will be getting is 7.938. Then third will be 17 minus 17.3. This will be minus 0.3. Minus 0.3. Minus 0.3 into minus 0.3 into 0.3. जो प्रोबेबिलिटी है उसकी. 0.3 कहाँ से आ गया? प्रोबेबिलिटी. माइनस 0.3 कहाँ से आया? 17 माइनस 17.3. ठीक है, तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी विल बी गेटिंग 0.027. 0.027. और लास्ट केस में आपका आ जाता है जब आपकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, जब आपकी रिटर्न दी हुई है 24. तो इस केस में कैसे करेंगे? हाउ वी विल प्रोसीड? 24 माइनस 17.3. तो यू विल बी गेटिंग ए फिगर ऑफ 6.7. 6.7 into 6.7 into 0.4. So figure already I have calculated, it will become 17.956. 17.956. This figure 17.956. ठीक है, just add all these figures. This will give you the variance of security B. So variance of this security B is 43.61.
वेरिएंस ऑफ द सिक्योरिटी इज 43.61, ठीक है, 43.61। और लास्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर द रूट 43.61, दैट विल गिव यू ए फिगर ऑफ 6.60, यानी कि सिक्योरिटी बी का जो रिस्क है या स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 6.6, ठीक है। तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव कैलकुलेटेड द रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ए, we have also calculated the return of security B, risk of security A, and we have also calculated the risk of security B. ठीक है। Next we have to calculate the covariance between security A and security B. So how you will calculate the covariance if correlation is not given? अगर correlation दिया होता क्वेश्चन में तो हम क्या करते, standard deviation of A into standard deviation of B into correlation of A and B. But since correlation is not given, it is missing, we can calculate the covariance from the deviations from the mean of the respective securities into the probability. तो हमको क्या करना है, deviations लेनी है, कहाँ से, रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न की डेविएशन लेनी है, उनको मल्टीप्लाई कर देना है और उनको फिर मल्टीप्लाई कर देना है उसकी प्रोबेबिलिटी से। तो जब टोटल आप करेंगे तो वो कोवेरियंस आ जाएगा। तो कोवेरियंस निकालने के लिए हमको क्या करना है, हमको डेविएशंस लेनी है। तो जैसे r माइनस आर ए, कितना हो गया, 5 माइनस 11.9, तो ये हो गया माइनस 6.9। तो इसी तरह से b का भी करना है, आर बी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी, यानी कि 4 माइनस 17.3, तो ये भी आ जाएगा माइनस में, तो ये आ जाएगा 13.3 माइनस 13.3। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, -0.1, तो ये हमारा हो जाएगा -6.9। ये डेविएशन है किसकी, ए की, ये डेविएशन है बी की, इनटू प्रोबेबिलिटी। ये कहाँ से आया, पहले वाले केस में ये आया 5 माइनस 11.9, तो -6.9। ये कैसे आया, 4 माइनस 17.3, तो ये -13.3, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी दी हुई है क्वेश्चन में 0.1। तो पहले वाले केस का जो टोटल आया वो है 9.171। Okay, you can see and check for others as well. The way we have done in the first case, we'll be repeating the procedure for the remaining. बाकियों के लिए भी सेम प्रोसीजर हमको रिपीट करना है। तो सेकंड के लिए जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, 9 माइनस 11.9 कितना हो गया, -2.9, तो ये ए के लिए हो गया। ए का डेविएशन कितना है, -2.9 है। बी का डेविएशन कितना है, 11 माइनस 17.3, यानी कि -6.3। बी का डेविएशन है -6.3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको प्रोबेबिलिटी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2, तो ये आपका आ जाएगा 3.654। ओके, इट इज 3.564। So we'll repeat the procedure for third and fourth case. So the total will be 21.14। तो ये आपका क्या आ गया, कोवेरियंस। तो कोवेरियंस इज 21.14, ठीक है। कोरिलेशन और कोवेरियंस they tell us which one tells the direction and other tells the relative relationship between these two, ठीक है। एक तो एब्सोल्यूट मेजर है और एक रिलेटिव मेजर, दोनों भी आपको ये बताएंगे कि दोनों सिक्योरिटीज हाउ दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, ठीक है। और लास्ट में हमको कैलकुलेट करना है कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी, how they are related with each other. If one moves in one direction, in which direction the other will move, ठीक है। तो हमको कैलकुलेट करना है कोरिलेशन। तो कोरिलेशन मैंने आपको बताया था, कोवेरियंस किसके बराबर होता है, कोवेरियंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इनटू कोरिलेशन ए एंड बी। तो हमें तीन चीजें मालूम है, कोवेरियंस ए बी का मालूम है, नंबर 1, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए मालूम है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वी आल्सो नो, बट वी डोंट नो अबाउट द कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी। देन इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट द मिसिंग वन, तो यूजिंग द फार्मूला, ठीक है। तो कोवेरियंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इनटू कोरिलेशन ए बी। तो ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, कोवेरियंस कितना, 21.14 इज इक्वल टू 1, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए कितना,
3.21 into standard deviation of B 6.6 into correlation AB. तो ये हमारा मिसिंग है, तो correlation AB हो जाएगा 21, yes, this will be 21.14 divided by 3.21 divided by into 6.6. तो ये आ जाएगा 0.997. So what does 0.997 indicates? That these two securities are very highly correlated. These two securities are highly correlated. It means if one will give the positive result, there are almost 100% chances or 99% chances that the other will also give the positive results. And if one will give the negative result, other will also give the negative result. Other security will also give the negative. Okay? So both the securities will move in the same direction. Both these securities will move in the same direction. That is the point. That is the point. Okay. Yes. So this question is very important from the viewpoint of the examination as well. So when you are going to exam, practice this question. So next question is regarding, we have to tell which securities are efficient and which are not. If we are making, then we have a rule of dominance. I will just explain what is rule of dominance. Sometimes you may have to apply this rule in order to tell which security is efficient and which security is not efficient. Rule of dominance. What is rule of dominance? If there are two securities A and B, and the return and risk of these two securities is given. Suppose 10% is the return, expected return, and the expected return of B is same, and the standard deviation of A is 0.8 and that of B is 0.6. Okay, two securities are there. They have the same risk, same return, expected return, 10%. One security has a lower risk, lower standard deviation, 0.8, and the other has a standard deviation of 0.6. So which security you will prefer? Because the return is same, we will prefer the security which has lower standard deviation. So in this case, security B has lower standard deviation. B has lower standard deviation. Security B has same return as A, but it has lower standard deviation. So we will prefer security B. We will prefer security B because it has lower standard deviation. अगर रिटर्न दोनों की सेम है, तब आप क्या देखेंगे, रिस्क किसका कम है, वो वाली सिक्योरिटी आप सेलेक्ट करेंगे. सेकंड केस में आप ये भी हो सकता है कि दोनों की जो रिस्क सेम है, लेकिन तब हम देखेंगे रिटर्न किसका ज़्यादा है. मान लीजिए ए और बी दो सिक्योरिटीज हैं, इसकी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो है 12 और इसकी है 10, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 6 है और इसकी भी 6. ठीक है, बोथ हैव सेम स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.6 and 0.6, both have the same standard deviation, both have the same risk, but in one security the expected return is 12. पहली वाली सिक्योरिटी में एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी है, 12. दूसरी वाली सिक्योरिटी में एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी है, 10. तो इन दोनों में से कौन सी बेटर है? जिसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा हो. The security which has a expected return, higher expected return, that security will be better. That security will be better. ठीक है? ओके. अगर रिस्क सेम है तो जिसकी रिटर्न ज्यादा होगी वो बेटर है, और अगर रिटर्न सेम है जिसका रिस्क कम है वो सिक्योरिटी बेटर है. दिस इज नोन एज रूल ऑफ डोमिनेंस. इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ डोमिनेंस. ओके, एंड वी विल सेलेक्ट द सिक्योरिटी अकॉर्डिंगली. We will select the security accordingly. Okay. Next question is regarding CML, capital market line. CML. Okay. Yes. CML line. This is question number 9. Question number 8. Sorry. Question number 8. We have to tell which securities, what should be the expected return from the security, and find out whether these portfolios are efficient or not. तो अब मैं आपको CML line के बारे में बता देता हूँ. This is known as the CML line, capital market line. CML line. Okay. If a portfolio falls on the CML, then it is considered as efficient. If it does not fall on CML, whether it may be giving a higher return or a lower return, then in that case it will be inefficient. जो रिटर्न बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगी जितनी कि हमारी CML के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तब तो पोर्टफोलियो क्या है, एफिशिएंट है. इन दैट केस पोर्टफोलियो इज एफिशिएंट. if its expected return is higher than or lower than the CML line return, then it will be considered as inefficient. तो इसके लिए आपको जो फॉर्मूला आपको आना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है एज पर CML line इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, standard deviation of the security divided by standard deviation of the market portfolio. This formula is very important, and many times this type of question has already been asked in the past in examination. ऐसा क्वेश्चन पास में बहुत बार आता है और आगे भी आने के चांसेस रहते हैं. तो आप इसको अच्छी तरह से करके जाएंगे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन. तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट लाइन, और इसका जो फॉर्मूला है वो है रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिटर्न ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो विच इज एक्सपेक्टेड माइनस रिटर्न ऑन द सिक्योरिटी विच इज रिटर्न रिस्क फ्री रिटर्न. रिस्क फ्री रिटर्न कौन सा होता है? जैसे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करें, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, वहाँ पर रिस्क जीरो होता है. तो या आप गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करें तो उसमें एक्सपेक्टेड रिस्क नहीं होता, जीरो होता है. इनटू दी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सिक्योरिटी, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं सिक्योरिटी की बात करें, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट. जैसे सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है वो आप डिनोमिनेटर में रखेंगे. तो इसमें 3 पोर्टफोलियो दिए हुए हैं, एक्स, वाई और जेड. हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा पोर्टफोलियो एफिशिएंट है और हर एक पोर्टफोलियो की एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी है एज पर CML. ठीक है, एज पर CML इसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी होनी चाहिए, और दूसरी एक्सपेक्टेड रिटर्न जो कि इन्वेस्टर खुद उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो ये वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमको देखना. ठीक है, तो पहले हम करेंगे कैलकुलेट सिक्योरिटी एक्स के लिए. विल बी कैलकुलेटिंग फॉर सिक्योरिटी एक्स. सिक्योरिटी एक्स की जो रिस्क है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी दी हुई है 12%, और मार्केट पोर्टफोलियो यानी कि रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड इज 15%, और इसका जो रिस्क है, रिस्क फ्री रिटर्न इज 5%, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट की है, रिस्क ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो इज 15%, और एक्सपेक्टेड रिटर्न है 17%.
रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इज 17% और इसका जो रिस्क है वो 15%। ओके, ये फिगर हमको दी है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है एक्स की 12%। ठीक है, मार्केट का रिस्क फ्री रिटर्न कितना है 5% और मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है 17%। अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 17% की एक्सपेक्टेशन है और उसका रिस्क कितना निफ्टी का 15%। तो हमको ये बताना है कि एक्स की सीएमएल के अकॉर्डिंगली सीएमएल यानी कि सिक्योरिटी मार्केट लाइन के अकॉर्डिंगली इसकी रिटर्न कितनी होनी चाहिए। तो इसकी जो रिटर्न होनी चाहिए ये बताने के लिए कि ये एफिशिएंट है कि नहीं हम करते हैं सीएमएल लाइन का यूज, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। तो इसके लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है उसका जो फॉर्मूला आई विल राइट डाउन अगेन, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रिटर्न स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सिक्योरिटी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट। तो सिक्योरिटी की जगह हम एक्स ले लेंगे, एक्स की वो लेंगे 5 प्लस यस 17 माइनस 5 और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 12% है। 15 इसका रिस्क ज्यादा है मार्केट से, तो इसका रिटर्न भी मार्केट के रिटर्न से ज्यादा होना चाहिए। मार्केट का जो रिस्क है सॉरी इसका रिस्क कम है 12% है और मार्केट का 15। ओके, जो सिक्योरिटी का रिस्क है वो ऊपर रखना है और मार्केट का नीचे रखना है। सिक्योरिटी का रिस्क कितना है 12 और मार्केट का रिस्क कितना है 15। तो इसका मतलब हमको ये इसकी जो रिटर्न एक्सपेक्टेड है वो मार्केट रिटर्न से कम हो। तो मार्केट की रिटर्न अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 17% तो इसकी रिटर्न मार्केट की रिटर्न से कम हो। कितनी कम होगी हम देखते हैं। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 144/50। तो दिस इज 5 प्लस 9.6 तो दिस इज 14.6। तो एज पर दी सिक्योरिटी मार्केट लाइन इसकी आइडियल रिटर्न है 14.6%। तो इसकी रिटर्न होनी चाहिए 14.6% सीएमएल लाइन के अकॉर्डिंग। लेकिन एक इन्वेस्टर है वो 16% की उम्मीद कर रहा है इससे, जिसमें कि 16% की। तो क्या उसकी उम्मीद अच्छी है कि बुरी है? उसकी उम्मीद गलत है। वो जो राइट रिटर्न उसको एक्सपेक्ट करनी चाहिए इस पोर्टफोलियो से वो है 14.6 और वो कितनी उम्मीद कर रहा है? What the investor is expecting, he is expecting 16%. So he is not likely to meet his expectations. जो उसकी expectations हैं वो too high है, जिसके लिए वो ज्यादा प्राइस देगा। ज्यादा प्राइस देगा तो इसका मतलब वो inefficient portfolio। ठीक है, this portfolio is inefficient because the expected return which the investor is expecting is more than the return which he should get as per CML line. तो CML line के अकॉर्डिंग उसकी रिटर्न होनी चाहिए 14.6%, जबकि वो उम्मीद कर रहा है 16%। तो इसका मतलब उसकी उम्मीद गलत है। वो उससे ज्यादा उम्मीद कर रहा है जितनी उसकी आइडियल रिटर्न है। तो वो अपनी उम्मीद को पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है, he will not be able to fulfill his expectation, जिसके लिए वो ज्यादा प्राइस देने को तैयार है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में है वाई की जो रिस्क है वो है 18%। वाई स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है 18% है। तो इसका मतलब ये वाई सिक्योरिटी का जो रिस्क है वो मार्केट रिस्क से ज्यादा है। मार्केट का रिस्क कितना है 15%, वाई का रिस्क कितना है 18%। इसका रिस्क ज्यादा तो इसकी रिटर्न भी मार्केट से ज्यादा होनी चाहिए। तो मार्केट की रिटर्न कितनी है 17, तो 17 से तो इसकी रिटर्न ज्यादा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? लेट्स चेक इट आउट। उसकी रिटर्न होनी चाहिए 5 प्लस 17 माइनस 5 18 डिवाइडेड बाय 50। 18 क्या है? रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय रिस्क ऑफ द मार्केट। मार्केट का रिस्क कितना है 15%। तो ऊपर हम रखेंगे रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी, जिस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं उसका रिस्क ऊपर रखेंगे। वो कितना है 18 और मार्केट का रिस्क कितना है 15। 18 डिवाइडेड बाय 15 तो 5 प्लस 17 माइनस 5 17 माइनस 5 हो जाएगा 12। 12 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 5 तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न आपकी हो जाएगी 19.4। तो एज पर सीएमएल लाइन दिस सिक्योरिटी इज लाइकली टू गिव ए रिटर्न ऑफ 19.4। सीएमएल लाइन के अकॉर्डिंगली ये वाली जो सिक्योरिटी है वो कितना रिटर्न देगी? 19.4% रिटर्न देगी। लेकिन इन्वेस्टर ने क्या एक्सपेक्ट किया हुआ है? इन्वेस्टर उसको ये मान के चल रहा है कि ये सिक्योरिटी 18% का रिटर्न देगी। दिस सिक्योरिटी विल गिव रिटर्न ऑफ 18%। ओके, what is the expectation of the investor? That this security will give a return of 18%. What does it mean? He is expecting lower return than what is the reasonable return for this security. तो इसका मतलब है वो efficient नहीं है. It is not, he is not efficient. He is inefficient in this calculating the return of this security. ठीक है, और लास्ट में है Z, सिक्योरिटी Z, जिसका रिस्क है 22%। इसका रिस्क भी बहुत ज्यादा है, इसका रिस्क भी मार्केट रिस्क से ज्यादा है। तो मेनली आप कंपैरिजन करेंगे रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी विद द रिस्क ऑफ द मार्केट। अगर सिक्योरिटी का रिस्क ज्यादा है, इफ द सिक्योरिटी हैज अ हायर रिस्क देन द मार्केट रिस्क, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी रिटर्न उस सिक्योरिटी से ज्यादा हो, जो मार्केट रिटर्न है उससे ज्यादा हो। तो जेड के केस में हम देखते हैं, जेड पोर्टफोलियो के केस में देखते हैं कि क्या रिटर्न है और क्या रिस्क है। इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 18%। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सॉरी 22, स्टैंडर्ड डेविएशन है 22, नॉट 15 बट 22 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो इट मींस दिस पोर्टफोलियो शुड गिव अस ए हायर रिटर्न देन द मार्केट रिटर्न। तो कितना ज्यादा वो हम देख लेते हैं, 5 प्लस 22 माइनस 5 22 डिवाइडेड बाय 50। तो इसकी आइडियल रिटर्न क्या होगी? 5 प्लस 17 माइनस 5, 17 क्या है मार्केट पोर्टफोलियो की रिटर्न, 5 क्या है रिस्क फ्री, इनटू रिस्क ऑफ द particular portfolio Z, that is 0.22 divided by 0.15. So the expected return from this portfolio is 22.6. Okay, but he is expecting a return of 25, which is way above the CML line predictions. CML line predictions से बहुत ऊपर वो expect कर रहा है 25%. Will he meet his expectations? The answer is he is not likely to meet his expectations. तो क्या ये portfolio efficient है? Answer no, it is not efficient. So it means all the three portfolios are inefficient because none of them have a return which is equal to the CML line. Okay. Yes. So this again is a very good question from the viewpoint of examination, because you have to remember this formula: CML line risk-free return plus return on market portfolio minus risk-free bracket में into standard deviation of the portfolio
of the portfolio as divided by standard deviation of the market. ठीक है? Yes. So that will give you the expected return from the portfolio. Yes. Sometimes what happens, you may be asked to calculate the risk of the portfolio in which you want to invest if you want a particular return. इसमें हमको रिटर्न कैलकुलेट करनी है. कई बार आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न पहले दी हुई है, तो आपको ये बताना है कि उस पोर्टफोलियो का रिस्क कितना होगा. फॉर्मूला बिल्कुल आप वही यूज करेंगे जो हम अभी यूज कर रहे हैं. ठीक है? तो जैसे क्वेश्चन नंबर इसी तरह का क्वेश्चन शायद लास्ट बार आया था, क्वेश्चन नंबर 10. वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर. रिस्क फ्री रिटर्न इज 7%. ओके, बीएसई से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 16% की रिटर्न. बीएसई से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट यानी कि बीएसई का है 8% और हमको एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए 12%. हमको ये बताना है रिस्क कितना है. रिस्क को कैसे मेजर करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन. इस बार दिस इज द क्वेश्चन. रिस्क फ्री रिटर्न इज हाउ मच? 17%. बीएसई से हमको कितनी उम्मीद है? 16%. दैट इज रिटर्न ऑन मार्केट, आरएम. ओके, रिस्क फ्री यानी कि अगर आप गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट फंड्स में, इफ यू विल इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट फंड्स, यू विल बी गेटिंग अ रिटर्न ऑफ 7% रिस्क फ्री. इफ यू विल invest in Nifty or Sensex, you will be getting a return of 16%, 16% की रिटर्न मिलेगी. And the risk of the market is 8%, 8% रिस्क है मार्केट का. अब अगर आपको 12% की रिटर्न चाहिए, तो आपको कैलकुलेट करना है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा. तो इसका मतलब है जो स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का है 8%, उससे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कम होना चाहिए. क्यों? यू मस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक, रीजन. क्योंकि अगर मार्केट हमें रिटर्न दे रही है कितना, क्योंकि मार्केट इज गिविंग अ रिटर्न ऑफ 16%, इट हैज अ रिस्क ऑफ 8%. 16% की जो रिटर्न दे रही है उसके ऊपर 8% रिस्क है. तो अगर हमें 12% की रिटर्न चाहिए तो इसका मतलब हमारा रिस्क कम होना चाहिए देन द मार्केट. तो कितना रिस्क होना चाहिए वो हम इसी फॉर्मूले में अगर सारी चीजें डालेंगे तो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो आर इज इक्वल टू रिस्क फ्री प्लस रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री. सेम फॉर्मूला आई विल बी रिपीटिंग. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट. ये वाला फॉर्मूला सेम हम यूज करें. तो हमको इस पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है. बाकी सब चीजें दी हुई हैं तो हम निकाल सकते हैं इजीली. तो इसमें रिटर्न हमें जो एक्सपेक्टेड है वो कितनी दी हुई है? 12% और रिस्क फ्री रिटर्न दिया हुआ है 7%. 7 प्लस रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो इज गिवन 16 माइनस 7 और हमको पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है और रिस्क ऑफ द मार्केट इज गिवन एज 8. ओके, so this will become this is the equation. All the things I have put up in the equation, सारी चीजें मैंने इक्वेशन में डाल दी हैं, लेकिन इसमें एक चीज नहीं डाली. one thing I have not put it in the equation. What is that? That is the risk of the portfolio. जिस पोर्टफोलियो का हमको रिस्क कैलकुलेट करना है, ठीक है, हमको इसका रिस्क कैलकुलेट करना है. Okay, we have to calculate the risk of this portfolio. We have to calculate the risk of this portfolio. How you will calculate the risk of this portfolio? तो इसको आप 12 में से 7 आप डिडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 this side. So this will become 12 minus 7 plus is equal to 9 by 8 into standard deviation of the portfolio. So this will become 5 into 8 divided by 9. That is standard deviation of the portfolio. This will become, ठीक है? It seems difficult, but it is not that difficult if you remember the equation. The CML line equation is very important. You must remember it. Okay. So standard deviation will become 40 divided by 9. So this is 4.4. So if you want a portfolio with the expectation of 12% return, अगर 12% की रिटर्न वाला कोई पोर्टफोलियो आपको चाहिए, 12% की रिटर्न वाला कोई पोर्टफोलियो अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आपका रिस्क कितना होगा? क्योंकि आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन मार्केट की रिटर्न से कम है, तो इसका मतलब इस पोर्टफोलियो का रिस्क भी कम होगा. तो मार्केट का रिस्क कितना है? मार्केट का रिस्क है 8%. तो आपका रिस्क 8% से कम होना चाहिए. तो हमने इसको सॉल्व किया तो इस पोर्टफोलियो का रिस्क आ रहा है 4.44. ठीक है, दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जो पहले हमने यूज किया. तो सीएमएल लाइन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. यू मस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ द सीएमएल लाइन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. आई विल बी पुटिंग द डिटेल्स. क्वेश्चन नंबर 11. द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 8%. रिस्क फ्री दिया हुआ है 8. मार्केट पोर्टफोलियो रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इज गिवन 18. द रिस्क ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो इज 5. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो इज 5. And investor has constructed a portfolio having risk of 10%. So risk of the portfolio 10. So what will be the yes with correlation with the market portfolio as correlation 0.50. Find out the expected return as per CML. CML line के according the expected return कितनी होगी? ये क्वेश्चन दिया हुआ. Risk free return दिया हुआ 8%. Return on market portfolio 18%. Risk of the market portfolio is 5%. Market portfolio का रिस्क 5% है. लेकिन हमने जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया उसका रिस्क 10% है. डबल है रिस्क मार्केट से. तो हमारी रिटर्न कितनी होनी चाहिए? डबल नहीं होगी पर हमारी रिटर्न ज्यादा होगी. We must expect a higher return from this portfolio. कितनी रिटर्न हम एक्सपेक्ट करें? इसमें कोरिलेशन भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, बट कोरिलेशन इज इररिलेवेंट. कोरिलेशन इज नॉट टू बी यूज्ड इन केस ऑफ सीएमएल. अगर सीएमएल का क्वेश्चन आता है तो कोरिलेशन हमको यूज नहीं करना होगा. दिस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज गिवन जस्ट टू कंफ्यूज द स्टूडेंट. स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है. दैट इज कोरिलेशन. तो कोरिलेशन इज नॉट टू बी यूज्ड एनीवेयर इन दिस क्वेश्चन. कहीं भी कोरिलेशन का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे. वी विल नॉट यूज कोरिलेशन एनीवेयर इन दिस इक्वेशन. ओके, सो एज पर सीएमएल लाइन what should be the ideal return? Ideal return of this portfolio, expected return will be risk free return plus return on
market portfolio minus risk free into risk of the portfolio divided by market risk, standard deviation of market. तो risk free दिया हुआ है 8 प्लस रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो 18, रिस्क फ्री रिटर्न इज 8, तो हमारा जो पोर्टफोलियो उसका रिस्क है 10 और ये होगा 5, तो दिस इज 8 प्लस 10 इंटू 28, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारी 28%। सिंपली आपको ओके, तो जब हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज, तो हम यूज करते हैं CML, कैपिटल मार्केट लाइन। ठीक है, अगर हम सिंगल सिक्योरिटी की बात करें, एक ही सिक्योरिटी की बात करें, तो उसमें हम यूज करते हैं SML, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। दोनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन दोनों में फर्क है। CML लाइन हम यूज करते हैं पोर्टफोलियो के लिए, जब दो सिक्योरिटी हो या दो से ज्यादा हो तब CML होता है। और अगर हम बात करें एक सिक्योरिटी की, तब हम यूज करते हैं SML। तो SML में हमें बीटा यूज करते हैं और CML में हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं। दोनों में कंफ्यूज नहीं करना आपको, आप अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए। CML लाइन इज फॉर पोर्टफोलियो एंड SML लाइन इज फॉर सिंगल सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है वो सिंगल सिक्योरिटी का आएगा। दोनों एक जैसे ही नजर आते हैं लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह बीटा यूज होता है SML। तो SML का फॉर्मूला आपको पता ही है, बिल्कुल कैपम की तरह है, जैसे हमने कैलकुलेट किया था CAPM, कैपम और SML एक ही चीज है। CAPM और आपका SML, इनका जो फॉर्मूला है, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न या कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री इनटू बीटा। तो लास्ट पार्ट खाली चेंज हो गया, उसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का यूज करते हैं। इसका मार्केट का वी यूज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट एंड आल्सो द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो, बट इन SML वी रिप्लेस इट विद बीटा। तो जो लास्ट वाला पार्ट है वो बीटा से रिप्लेस होता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमको एक सिंगल सिक्योरिटी का रिटर्न देना है। रिस्क फ्री रिटर्न दिया हुआ है 5 और मार्केट रिटर्न बिल्कुल सेम है, 15% है, सॉरी मार्केट रिटर्न दिया हुआ 14%, मार्केट रिटर्न इज 14% एंड बीटा इज दिया हुआ है 1.5, इट हैज अ बीटा ऑफ 1.5। तो हमको एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है। तो 5, ठीक है, 5 इज रिस्क फ्री, 14 इज रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मार्केट एंड वी हैव ए सिक्योरिटी विद द बीटा ऑफ 1.5। अब इस सिक्योरिटी पे हमें कितना रिटर्न मिलने वाला है? तो मैंने आपको बताया था, अगर बीटा का रिलेशनशिप होता है मार्केट से, अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब वी आर टेकिंग मोर रिस्क। बीटा अगर 1 से ज्यादा है तो वी आर टेकिंग मोर रिस्क। तो इसका मतलब जब हम मार्केट से ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं, तो हमको रिटर्न भी ज्यादा मिलनी चाहिए। मार्केट 14% की रिटर्न दे रही है, मार्केट इज गिविंग अस द रिटर्न ऑफ 14, तो दिस सिक्योरिटी मस्ट गिव अ रिटर्न हायर देन 14%। 14% से तो इसको ज्यादा रिटर्न दे रही है, तो कितनी रिटर्न आप इस सिक्योरिटी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इज इक्वल टू, यस मैं यही फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 5 प्लस 14 माइनस 5 इंटू 1.5, तो दिस इज 5 प्लस 13.5 मीन्स 18.5। तो आप इस सिक्योरिटी से जो रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे वो है 18.5, बिकॉज दिस सिक्योरिटी हैज ए बीटा विच इज हायर देन मार्केट। इसका लॉजिक क्या है, क्यों हम इस सिक्योरिटी से ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम इस सिक्योरिटी से ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज दिस सिक्योरिटी हैज ए बीटा ऑफ 1.5। तो बीटा अगर 1 से ज्यादा होगा तो एक्सपेक्टेड रिटर्न भी ज्यादा होगा। अगर 1 के बराबर होगा तो हमारी रिटर्न उतनी ही होनी चाहिए जितनी की मार्केट की है। अगर 1 से कम है, इफ इट इज लेस देन 1, व्हाट डज इट मीन? इफ इट इज लेस देन 1, इट मींस दैट दिस सिक्योरिटी, ओके, दिस सिक्योरिटी अगर बीटा 1 से कम है तो इस सिक्योरिटी का रिटर्न भी कम होना चाहिए। तो इसी का सेकंड पार्ट है, इफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी इज 13%, व्हाट मस्ट बी इट्स बीटा? तो यानी कि अगर 14% मार्केट दे रही है, एच की जो बीटा है वो 1.5 है, तो उसकी रिटर्न भी ज्यादा होगी। एक दूसरी सिक्योरिटी है जी, जिसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न है 30%, तो इसका मतलब उसका बीटा 1 से कम होगा। ठीक है, द बीटा ऑफ द सिक्योरिटी मस्ट बी लेस देन 1, दैट्स चेक इट आउट। उसका हमको बीटा कैलकुलेट करना है। एक दूसरी सिक्योरिटी है जी, जिसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न 30% है, तो इसका हमको बीटा कैलकुलेट करना है। व्हाट शुड बी इट्स बीटा? गिवन दैट द रिस्क फ्री रिटर्न इज 5 एंड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट पोर्टफोलियो इज गिवन 40। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें दी हुई है, पहले कितनी दी हुई है? एक्सपेक्टेड रिटर्न इज ऑलरेडी गिवन, बट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 30, expected return is 13, okay, and बीटा नहीं दिया हुआ, इसका कैलकुलेट करना है। रिस्क कितना है 5 और मार्केट से रिटर्न कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 40%, तो हमको ये कैलकुलेट करना है कि इस सिक्योरिटी का बीटा कितना होना चाहिए। तो सिंपल है, तो आपको वही SML वाला जो फॉर्मूला वो यूज करना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रिटर्न इनटू बीटा। तो ये दिया हुआ आपका रिस्क फ्री रिटर्न 5 प्लस रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इज 14 माइनस रिस्क फ्री रिटर्न इनटू बीटा। तो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं 13%, तो 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 बीटा। ठीक है, यस, तो दिस इज 30 माइनस 5 8 इज इक्वल टू 9 बीटा। बीटा इज 8/9, तो ये हो जाएगा 0.89। ओके, तो हम इस सिक्योरिटी का जो बीटा है वो 1 से कम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम सिक्योरिटी से जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मार्केट रिटर्न से कम है, तो उस सिक्योरिटी का बीटा भी 1 से कम होगा। अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो हमारी रिटर्न वो मार्केट रिटर्न से ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर बीटा 1 से ज्यादा होगा, व्हाट डज इट मीन? वी कैन एक्सपेक्ट ए रिटर्न व्हिच इज हायर देन द रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। अगर 1 से ज्यादा बीटा होगा, अगर 1 से कम बीटा होगा तो इसका मतलब है जो हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो मार्केट रिटर्न से कम। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड द मीनिंग ऑफ द कम। ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12 which we have discussed. Okay, yes, now we can discuss question number 40. So we have done almost all the questions of this book. Question number 40. If anyone of you don't have the question, you can just ask me, I will send you the question.
Question is the risk-free rate is 6%, or risk-free is 6%, and the return on market portfolio is 19%, and the actual return provided by the security is 20%. Return from the security is 20%. What must be beta if the security is correctly priced? Beta कितना है अगर security correctly priced है? पहला पार्ट है अगर security का रिटर्न और मार्केट का रिटर्न, सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न सेम है 20% है, तो इस सिक्योरिटी का बीटा कितना होना चाहिए? तो हम कैलकुलेट करते हैं बीटा वेरी इजी बाय यूजिंग द सेम रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रिटर्न इनटू बीटा। तो ये 20 हमको दिया ही हुआ है, तो 6 प्लस 19 माइनस 6 इनटू बीटा। ये बीटा 1 से ज्यादा होना चाहिए क्योंकि 20% हमें रिटर्न प्रोवाइड कर रही है सिक्योरिटी, तो 19% मार्केट का रिटर्न है, तो इसका मतलब इस जो हमारा आंसर होगा बीटा 1 से ज्यादा होगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं बीटा। तो 14 इज इक्वल टू 13 बीटा, 14 is equal to 13 beta, beta is equal to 14 upon 13. This is 1.08 बीटा हो जाएगा। बीटा क्यों, बीटा 1 से ज्यादा क्यों है? क्योंकि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है हमारी सिक्योरिटी की वो मार्केट रिटर्न से ज्यादा है। मार्केट की रिटर्न कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 19%, और हम इस सिक्योरिटी से जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कितनी रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 20%, तो इसका मतलब इसका बीटा ज्यादा होगा 1 से। इट मस्ट हैव अ बीटा ऑफ 1 मोर देन 1, तो अभी हमारा आंसर निकल गया 1.08। अगर हमारी सिक्योरिटी ओवर प्राइस है तो बीटा कितना होगा? क्वेश्चन है अगर सिक्योरिटी ओवर प्राइस है तो इसका मतलब जो बीटा है वो 1.08 से ज्यादा लेगा। अगर अंडर प्राइस है तो इसका मतलब 1.08 से कम होगा बीटा, ठीक है? अगर अंडर प्राइस है तो बीटा कम है, अगर ओवर प्राइस है तो बीटा 1.08 से ज्यादा है। ये हमारा डिसीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन का ही क्वेश्चन है, एसएमएल का। इसमें हमें रिस्क फ्री रिटर्न दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है, तो आपको उसी तरह से आपको इसका कैलकुलेट करना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ और बीटा भी दिया हुआ, लेकिन साथ में लिखा हुआ है सिक्योरिटी मार्केट लाइन। क्वेश्चन नंबर 16। नाउ आई एम डूइंग द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है और बीटा भी दिया हुआ है, बोथ आर गिवन। तो क्वेश्चन इज व्हिच वी शुड चूज, बिकॉज़ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एसएमएल सिक्योरिटी मार्केट लाइन, तो इस केस में हम बीटा यूज करेंगे, ठीक है? तो वी विल बी यूजिंग बीटा नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन। यस, ओके। तो इसमें पहले जैसे सिक्योरिटी ए है, सिक्योरिटी ए, इसका जो एस्टिमेटेड रिटर्न है 31 है, एस्टिमेटेड रिटर्न दिया हुआ है 31। हमको कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो इज 15, आरएम दिया हुआ है 15 और रिस्क फ्री रिटर्न दिया हुआ है 7, एंड बीटा ऑफ दिस स्टॉक इज गिवन एज 2। दिस इज फॉर सिक्योरिटी ए। सिक्योरिटी ए का जो बीटा है वो है 2, सिक्योरिटी ए का बीटा दिया हुआ है 2। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी है? तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हम देख सकते हैं, दैट इज 7 प्लस 15 माइनस 7 इनटू 2, बीटा इज 2, 7 प्लस 15 माइनस 7 इनटू 2, तो दिस इज 23। ओके, so as per SML line, the return which is expected from security is 23%. How you have calculated 23? Risk free return is given 7, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, मार्केट रिटर्न दिया हुआ 15, तो 7 प्लस 15 माइनस 7 इनटू बीटा। बीटा किसका लेंगे? ए का, 2। इसी तरह से आप बी, सी, डी और ई का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बी, हाउ यू विल कैलकुलेट? फॉर सिक्योरिटी बी वी विल कैलकुलेट रिस्क फ्री 7 प्लस 15 माइनस 7, यानी कि 8 इंटू 1.4, 8 इंटू 1.4 प्लस 7, तो आपका रिटर्न आ जाएगा 18.4, 18.2। Similarly for C it will be 18, for C it will be how much? For C it will be 15 minus 7 into 1.2 plus 7, तो आपकी रिटर्न आ जाएगी 16.6। तो आपको ये बताना है कि कौन सी सिक्योरिटी अंडर प्राइस है और कौन सी ओवर प्राइस है। तो अगर एस्टिमेटेड जो आपकी रिटर्न है यस वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द रिटर्न प्रोवाइडेड बाय एसएमएल, तो मतलब इसका मतलब हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो ये अंडर प्राइस है, और अगर हम इसको उल्टा कर रहे हैं तो वो ओवर प्राइस है, ठीक है? तो इसमें रिटर्न हमारी एक्सपेक्टेड है 18.2, ठीक है, जैसे बी में, और एस्टिमेटेड रिटर्न 18 जो उसके हिसाब से हम प्राइस देंगे 14 के हिसाब से, लेकिन जो एसएमएल लाइन बता रही है वो बता रही है कि हमारा 18.2% रिटर्न एक्सपेक्टेड है, बिकॉज वी आर गिविंग लो प्राइस टू कैश। तो इसी तरह से हम ओवर प्राइस या अंडर प्राइस सिक्योरिटी का बता सकते हैं। तो दिस कंप्लीट्स अवर टॉपिक ऑन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपको 2-3 चीजों के बहुत ध्यान से करना है। एक तो आपको रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है, जिसके ऊपर की क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद होना चाहिए, दैट इज अंडर द रूट वेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस weight of a square into standard deviation of a square plus weight of b square into standard deviation of b square plus 2 weight of a weight of b into standard deviation of a standard deviation of b correlation of a and b, और जो लास्ट पार्ट तीनों मिलकर उसको कोवेरिएंस भी बोलते हैं। एक चीज तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। पहले आप इंडिविजुअल सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मैंने बहुत अच्छी तरह से बता दिया आपको, फिजिकल क्लास में भी और ऑनलाइन क्लास में भी, दोनों काफी अच्छी तरह एक्सप्लेन हो गया। अगर आप अभी क्लास में है तो आप क्लास में समझ लीजिए, नहीं तो बाद में इसका वीडियो आप अपनी जो वेबसाइट कॉलेज सोल ने आपको एक वेबसाइट दिया हुआ है, दे हैव गिवन यू द वेबसाइट, यू जस्ट कैन गेट देयर बाय पुटिंग योर पासवर्ड, अपना पासवर्ड डालिए और आपको ये वीडियो जो रिकॉर्डिंग है ये देख सकते हैं इफ यू आर नॉट अटेंडिंग क्लास राइट नाउ, ठीक है? तो ये आपका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका सीएमएल में जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आपका सिक्योरिटी का देखते हैं और मार्केट से इसको कंपेयर करते हैं, और ये वाला सीएमएल लाइन वाला जो क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको बताया सीएमएल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो, सिक्योरिटी लिखा मैंने, पोर्टफोलियो लिखना आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट, ठीक है?
तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो ज्यादा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट से, तो इसका मतलब इस पोर्टफोलियो से जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो मार्केट की रिटर्न से ज्यादा है, वी आर एक्सपेक्टिंग ए हायर रिटर्न फ्रॉम दिस पोर्टफोलियो रादर देन द मार्केट एज कंपेयर टू द मार्केट। तो ये इस लाइन को हम बोलते हैं CML, कैपिटल मार्केट लाइन। CML इज यूज्ड फॉर पोर्टफोलियोज, उसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करें। दूसरा होता है सिक्योरिटी मार्केट लाइन। सिक्योरिटी मार्केट लाइन बिल्कुल आपका कैपम की तरह है, CAPM मॉडल। उसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्लेस कर देते हैं बीटा से। तो हम देखेंगे कि बीटा, स्टॉक का बीटा कितना है। स्टॉक का बीटा 1 हो सकता है, 1 से कम हो सकता है या 1 से ज्यादा हो सकता है। अगर 1 है स्टॉक का बीटा, तो इसका मतलब उसका जो रिस्क है वो मार्केट रिस्क से बराबर है। तो हम जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस सिक्योरिटी से बिल्कुल मार्केट के बराबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हमारा बीटा 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब वी आर टेकिंग मोर रिस्क देन द मार्केट, उस सिक्योरिटी का रिस्क ज्यादा है, तो उस सिक्योरिटी से रिटर्न भी हमें ज्यादा होनी चाहिए। और तीसरा केस है अगर बीटा 1 से कम होता है, व्हेन द बीटा इज लेस देन 1, इट मींस द सिक्योरिटी हैज अ रिस्क व्हिच इज लोअर देन द मार्केट। जब उस सिक्योरिटी का रिस्क मार्केट के रिस्क से कम है तो इसका क्या मतलब हुआ, उसकी रिटर्न भी मार्केट की रिटर्न से कम है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दैट सिक्योरिटी विल बी लेस देन द मार्केट। So I have explained all the things, and also we have discussed how to calculate the covariance, how to calculate the correlation if correlation is not given by using the formula of covariance. ठीक है, अगर हमें covariance पता है और हमें standard deviation मालूम है, if we know the covariance we also know the standard deviation, we can calculate the correlation as we have discussed in one of the questions earlier. तो आपको रिटर्न कैलकुलेट करना चाहिए आना चाहिए, जो कि बहुत इजी है, वेटेड एवरेज। आपको रिस्क पोर्टफोलियो का कैलकुलेट करना है। रिस्क आप अंडर द रूट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वेट ऑफ ए स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी इनटू कोवेरिएंस ऑफ ए। कोवेरिएंस की जगह आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इनटू कोरिलेशन ए एन वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसमें आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन 110% जरूर आता है। एवरी टाइम देयर इज वन फुल क्वेश्चन ऑफ इफ इट इज ए 75 मार्क पेपर, तो आपका उसमें से 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल, 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा। समटाइम्स दे मे आस्क इवन मोर देन वन क्वेश्चन, 1.5 क्वेश्चन भी, 1.5 क्वेश्चंस may be there from this topic. So this topic is very important, very relevant for your final exam. So you should thoroughly prepare this particular topic. So Sunday will be our last class. In that class, I will be discussing derivatives. Although in the schedule it will be mentioned as उसमें हमने दूसरा म्यूचुअल फंड किया हुआ है, लेकिन क्योंकि ये क्लास मिस हो गई है on 6th because of the celebration, so we don't have the time to discuss that because as compared to mutual fund, derivatives are very important. ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव वाला, दो म्यूचुअल फंड वाला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब टाइम नहीं है उसको डिस्कस करने के लिए। तो विल बी डिस्कसिंग दी डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में आपका फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों हम डिस्कस करेंगे। हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन ऑप्शंस एंड न्यूमेरिकल्स, ऑन ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। तो उसके लिए टेक्निकल है, इफ यू आर अटेंडिंग द क्लास टुडे यू मस्ट अटेंड दैट क्लास एज वेल, और एट लीस्ट यू शुड सी दी videos from the website which is provided by this all authorities. You can go to your dashboard and you can have a view of that video if you fail to attend the class in any case. Now it is time for question and answer session. Last time nobody asked any question, that's why the problem is there. If some students are attending, they can ask the question. Okay, so I will move on to the question and answer session. Feel free to ask question. Yes, question and answer. Yes. Questions are not there. I don't know what is the reason, but questions are not coming forward. As in the case of the last class, I have not received any question. So what I will do, I will utilize this time. If you people don't have any question, so I will give you a glimpse of the coming class, what is coming in the next class. In the next class, we will be discussing derivatives. Derivative is an asset, the price of which is dependent upon an underlying asset. तो जिस चीज के बारे में डेरिवेटिव का प्राइस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उस अंडरलाइन एसेट का प्राइस देखना होगा, जैसे गोल्ड डेरिवेटिव, सिल्वर डेरिवेटिव, तो दीस आर द फिजिकल डेरिवेटिव्स। देन वी हैव द फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, जैसे कि इक्विटी शेयर का डेरिवेटिव या आपका फॉरेन एक्सचेंज का डेरिवेटिव, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। तो इन द एग्जामिनेशन वी विल बी गेटिंग क्वेश्चन ऑन फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स लाइक इक्विटी डेरिवेटिव, थिंग्स लाइक दैट। तो डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव होता है द प्राइस ऑफ एन एसेट व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम एन एसेट। तो अगर आप शेयर डेरिवेटिव की बात करें तो शेयर का प्राइस, अगर आप टाटा स्टील का शेयर है उसका 3 महीने के बाद प्राइस क्या होगा, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ दैट शेयर आफ्टर 3 मंथ्स। तो ये फ्यूचर मार्केट है या फॉरवर्ड मार्केट है, उसमें हम उसका प्राइस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम देखेंगे कि आज शेयर का प्राइस कितना है, फ्यूचर प्राइस डिपेंड्स अपॉन टुडेस प्राइस। So that future price is derivative and its price has been derived from present price. ठीक है, so we have derived the price of an asset from the current price of that asset. So that is known as derivative. Similarly, you can have gold derivative, you can have silver derivative, you can have derivative for any other commodity like grains, like rice. ठीक है, किसी भी एप्पल, किसी भी commodity का भी आप derivative ले सकते हैं. Similarly, you can have derivative for financial assets like equity shares. तो इसमें हमको जो क्वेश्चन करने हैं वो फॉरवर्ड और फ्यूचर्स, और दूसरा आपका आ जाता है फॉरवर्ड एंड फ्यूचर, एक आ गया, और दूसरा आपका आ जाएगा ऑप्शंस। तो दोनों चीजें हम कवर करने की कोशिश करेंगे क्लास में, although the time is limited, short, but whatever we can do in the class we will be doing it. And those who have not attended the physical class, they must see this lecture or see video recording देख सकते हैं आप, अगर आप लाइव अटेंड करें। I will prefer if you attend the live because in that case you can address your questions as well. जब अगर आप वीडियो देखेंगे तो क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते। In that case you can forward me your query. Most of you are part of the WhatsApp group, आप उस WhatsApp group में भी अपना क्वेश्चन एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो no questions are coming forward. That is all for today's class. तो इसमें हम फ्यूचर ऑप्शंस और हाउ टू लुक एट द वैल्यू ऑफ ई, मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट द ई टेबल्स। जो मैं डेरिवेटिव्स की बात कर रहा हूँ इसमें हम ई टेबल यूज करते हैं। ई टेबल आप इसकी वैल्यू आपको एग्जामिनेशन में प्रोवाइड की जाएगी।
यू विल बी गेटिंग द एग्जामिनेशन। अगर आपको नहीं दी जाती तो आप इसको कैलकुलेट करना सीख लीजिएगा। ई की जगह हम 2.71828 एक वैल्यू होती है वो यूज करते हैं। तो मैंने फिजिकल क्लास में आपको सिखाया था कि कैसे उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स। ई रेज़ टू द पावर एक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नहीं तो आपको टेबल देखनी है कैसे उसकी वैल्यू हम निकालें। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर आई थिंक टुडेज क्लास। वी हैव डिस्कस्ड इनफ इन टुडेज क्लास। इफ यू समराइज करते हैं, जब हम एग्जाम के लिए जाते हैं तो समराइज करते हैं, तो आप ये वीडियो भी देख लें तो समरी आपकी अच्छी हो जाएगी। समराइज फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज कैपिटल क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ फॉर्मूले आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस। Yes, Mohit ji, you can end my session if you are listening to me. Hello, Mohit ji, are you there? Or otherwise, I will close myself.